Good evening, everyone, and welcome to this wonderful panel discussion. Just to introduce myself, this is Kunal here, and what we want to do today is, as we see the environment around us due to this pandemic situation, and of course the challenges what we are facing in our day-to-day life. We were reading, this wonderful book named "What to Say When You Talk to Yourself" by Shad Helmstetter. The learning was so exciting that we thought, why not share this with all of our friends and known and near and dear ones, because I'm sure the learning what we're going to discuss today will definitely add values to your life and you'll see benefit of that. I have read somewhere that we are not what we are thinking. What we think, that's what we are, and that's exactly what this book talks about. And to discuss about this, we have two wonderful guests today in our studio. So let me invite our guests today, and we'll start with that. Hi Vinay, hi Dityendu, welcome to the studio. Hi Kunal. Hi How are you Dityendu. guys doing? Hi Vinay. How are you guys doing? All good? Awesome, Kunal. Wonderful, wonderful. Awesome, So Kunal. Dityendu, I mean, if we would like quickly, if you both would like to introduce yourself quickly. Sure. So, hi everyone. My name is Diptendu. You can call me Deep, and I'm basically from New Delhi, and I am an entrepreneur by choice, and I have more than 13 years of corporate experience. I have been working in travel and industry mostly. Yeah. Wonderful. Vinay. Yeah. So Kunal, so my name is Vinay Jaiswal, and I basically come from Odisha, a small town known as Belpahar, and I'm in Bangalore from like past 12 years, and I am working as a HR professional from past 11 plus years. Wonderful. Great. So great to have you both in this panel, Vinay and Deeptendu, and thank you so much for giving us your time. So to start this entire discussion, Deeptendu, and Vinay, as I spoke about, that we will be talking about this wonderful book, "What to Say When You Talk to Yourself" by Shad Helmstetter. And we all already know that we have a lot of other motivational book around us. A lot of sessions keeps on happening. There are a lot of good speaker, I must say, that who gives a lot of interesting thoughts that how we can develop our thought process and everything. Then why this particular book you guys thought that we should discuss about? So if you could put little clarity on that. Sure, Kunal. And see, basically, this is the first non-fiction book that I have read, and honestly, मैं उतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं था. Of course, I used to read books, लेकिन उतना मैं पढ़ता नहीं था. And fortunately, I came across this book, and in fact, I loved it because I could relate so much with my own life. बहुत सारा ऐसा चीज था जो मुझे पता था, बहुत सारा ऐसा चीज था जो मुझे नहीं पता था. ये बुक बेसिकली सेल्फ टॉक के बारे में है, हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताएं, it is the brain can be divided into two parts, right? One which is a conscious mind and one which is the subconscious mind. और ये subconscious mind कितना important है अपने लाइफ पे, अपने जो हम है, जैसे कुणाल ने अभी अभी कहा कि हम जो सोचते कि हमें वो नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं वही हम है. और ये बुक बहुत अच्छी तरह से वो बताते हैं हमें. एंड एक्चुअली जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, एंड आई कुड रिलेट टू माय चाइल्डहुड, आई कुड रिलेट टू माय प्रेजेंट, और मैं ये भी मतलब आई कुड अप्लाई दिस ऑल द लर्निंग्स टू माय लाइफ एज वेल. बहुत सारे एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा. And of course, मतलब this is a book which I have shared with my friends, with my families, and I have recommended it very highly, and especially to people who are having kids, right? They should definitely read this book. Absolutely, I cannot echo enough from you, Deeptendu, कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जब ये बुक हम लोग स्टार्ट करते हैं, I mean, being a software engineer, I also come from a background जहाँ पे engineering खत्म तो book पढ़ना खत्म. That's the kind of mentality. We go with some technical training and all that. That's a one part of our career. But then yes, reading these sort of books was never kind of something which excited me. But like you, when I was introduced to this book,
trust me, I mean, for the first and Vishal told me this. I remember that you read first few pages, and after that, you yourself will not leave this book, and that's exactly what happened. Absolutely. I Absolutely. just have to put an effort for first few pages, and after that, it was so exciting, so kind of informative, and you can relate so much from your own life that you feel excited about reading this book. So, Vinay, how about you? I completely echo with you, Kunal and Diptendu, and it is really a life-changing book for me. And when I started reading this book, I was actually able to relate every aspect of my life. And that's why, like as Diptendu was saying, कि उसने अपने सारे दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को recommend किया. मैंने भी सब बहुत लोगों को recommend किया that it's actually a great book to have in your library or with you, which will help you grow. बट लेकिन क्या होता है, सबके लिए बड़ा फनी साउंड करता है ये बुक, क्योंकि सब सोचते हैं व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं. 80% टाइम यू विल सी दैट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, and what you talk to yourself is very important and it plays a very key role in your life. And this book is a life transforming book for me. And if you see, इसमें हर एक टेक्निक दिया हुआ है कि how you can keep yourself motivated. लेकिन यही होता है कि हम जब मोटिवेशनल टॉक, जैसे आपने कहा कि मोटिवेशनल टॉक इतने सारे बुक्स लिखे जाते हैं, वो क्यों लोग रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां उनके पास टेक्निक नहीं है. दे जस्ट गिव यू गुड वर्ड्स, वो आपको एनकरेज करके वो बूस्ट कर देंगे, लेकिन कोई टेक्निक नहीं बताएगा आपको कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं. एंड दिस बुक इज रियली अमेजिंग. Bilkul, absolutely correct point you have mentioned, Vinay. That this books does not give you motivational talk. It's actually talking about the tips which we can apply in our day-to-day life. And just for the sake of our audience, I must say that we are not the author. We are not gonna get any royalty, so we are not here to promote this book. But why we are talking about this book, let me tell you very clearly, that when we read this book and the kind of learning what we got and the kind of reflection by applying these learnings what we got in our life, we felt that we definitely should share these learnings with you guys and recommend these books to you, because when you know something good, you definitely love to share this across. And while reading this book, that's interesting concept I come across. And when first time when I read this concept, I didn't believe it. But when I retrospect and I thought about it, I felt, man, this is absolutely true. And it talks about that in your first 18 year of an age, all of us gets more negative programming than the positive programming. Now think about first 18 years, you are surrounded with your parents, your siblings, your friends, your near and dear ones, your classmates, your teachers, who all are your well-wisher. And I was amazed that in those years, how I can be negatively programmed. I mean, of course, the book talks about it's not intentional and all that. But Vinay, how was your thought when you first time read that, in the first 18 year, we get approx, if you are grown up in an averagely positive family also, you get at least 148,000 times you hear no. So how was your reaction when you read about this particular concept? It was initially when I read about this first line in the book, 148,000 no's. तो मेरे को बड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये कैसा है कि बाय 18 इयर्स ऑफ एज एक इंसान 148,000 नो सुन चुका है, और बड़ा कंफ्यूजिंग था. बट व्हेन आई रिफ्लेक्टेड बैक कि हमारे बचपन में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मेरे को कितनी बार नो, हर चीज के लिए अननोइंगली, दे वर नॉट वेरी इंटेंशनल कि मुझे वो गलत बताना चाह रहे थे या कुछ भी करना चाह रहे थे, ऐसा किसी का इंटेंशन नहीं था. बट वो क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, दे एक्चुअली वांट टू प्रोटेक्ट अस. और आपको जो अगर नॉर्थ से होंगे, उन्हें तो ये लाइन बड़ी अच्छे से पता होगा, बड़ा कॉमन है वहां पे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने ही दो. तो ये बहुत कॉमन लाइन है. आप कुछ भी करने जाओ या कुछ भी नया करो या कुछ भी करो आप, आपको हमेशा लाइन बोलेंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो. ये बहुत कॉमन लाइन है. आपको भी शायद कुणाल, आप भी रिलेट कर पाओगे. बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट कह रहे हो आप इन्हें. सो आई मीन in fact, मेरे को तो सबसे important क्या लगा ना अभी, after reading this book and now being a father myself of a 1-year boy, whenever I say him, of course, I'm trying to protect him because, he's trying to run around, he tried to catch hold of things and all those things. And in a way, you are worried that if he don't hurt himself and all those things. And for protecting him, you say, "Arey, aise mat karo beta," I mean, don't try this and don't try that. And that's where it strikes to my own mind, am I programming him negative? So, you need to understand the balance between, negatively programming and, how you're protecting your kid.
you can definitely protect your kid while, you know, having by helping him out. Let's say if my kid is running around, I can, you know, hold him instead of programming him that don't run. In fact, after reading this book, one simple thing which I have done, like I mean, I'll talk about more about this in detail, but let me bring Deeptendu here first, because I'm sure Deeptendu would have also reflected his childhood when he must have read कि यार हमें भी इस तरीके की programming हुई है क्या. So Deeptendu, how was your thought process when you come across this particular point? Actually, जब मैं ये point पढ़ा, so I took a flashback. मतलब मेरे बचपन में मैं चला गया. Of course, इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल जब ये बताया, ये लाइन पढ़ने से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इस बुक ने जब कुछ एग्जाम्पल्स दिया तब उस एग्जाम्पल से मुझे बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ. जब मैं छोटा था, आई थिंक क्लास 2-3 में था, एंड को करिकुलर एक्टिविटीज होता है, राइट, वो कंपटीशन होता है, स्कूल में हाउसेस होता है, तो हर एक हाउस पे एक डांस कंपटीशन था. तो डांस कंपटीशन में क्या हुआ कि हर एक हाउस से आपको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है. तो जो टीचर सिलेक्ट कर रहे थे आपको, ठीक है, उन्होंने अनइंटेंशनली कहा होगा, क्योंकि we want the house to win, right? वो एक competitiveness रहता है, so we want the house to win. but क्या होता है कि जब हम जब हम उस कंपटीशन में रहते हैं तो अननोइंगली टीचर्स कुछ बोल जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल उसने मुझे बताया कि यार आपसे नहीं हो पाएगा, लेट अदर पर्सन विन. ओके, दिस वाज हिज इंटेंशन. लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप डांस नहीं कर पाओगे, राइट, यू कैन नॉट डांस. So this is something which got programmed in my mind, and this is something which stick to me for long. मतलब मेरे जो जान पहचान होंगे वो उन्हें शायद पता होंगे कि वो भी शायद ये देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं कितना नाचता हूँ, या I don't know, but ये हो गया. But next thing when I understood कि ऐसा हो सकता है, उस बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ था कि अगर वो एक सेम एग्जांपल दिया हुआ था कि एक बच्चा गया एक डांस स्कूल में, पहला टीचर जो था उसने उसे डायरेक्टली बोल दिया कि he told the truth to the child, okay, कि आपसे डांस नहीं हो पा रहे. What happened? The child got demotivated. Okay, but still he took a courage and he went to some other school. वो टीचर ने उसको क्या बोला कि हाँ, see, you danced very well, but these are the steps which you can do better, right? तो उससे उसका mindset को क्या हुआ कि he got a mindset. He knew that he was not able to dance well, but still he got some encouragement from his teacher, right? So क्या हुआ कि he got the confidence and he started dancing, okay, and that's how he progressed. तो जो पहले केस पे हुआ उसने पूरा डांस छोड़ ही दिया, राइट, और दूसरा केस में स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्राम होता गया. लेकिन बस मेरा कहना का ये मतलब है कि एक छोटा सा बच्चा, उनके माइंड बहुत ही मतलब फ्रेश होता है, मतलब एक ब्लैंक सीडी के जैसा होता है, उन पे आप जो भी प्रोग्राम करो वो बहुत टाइम तक रह जाता है. सो एंड after reading this book, I realized this and I started कि मैं कोई भी occasion पे जहाँ पे भी opportunity मिलेगा मैं डांस करने वाला हूँ. That is what I programmed myself. Wonderful. In fact, आपकी स्टोरी सुन के मुझे yes विनय, you are saying something. जब दीप्तेंदु ने कहा, मुझे अपना स्कूल डेज याद आ गया कि उस टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे को गाने गाने का बहुत शौक है. तो मैं वहाँ पे कंपटीशन के लिए गया कि वहाँ पे सिलेक्शन के लिए कि लोग सिलेक्ट कर रहे थे, और फिर मुझे भी बोला गया कि तुमसे गाना नहीं होगा और उस टाइम तुम कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, उस तरह का. और वो प्रोग्रामिंग मेरे अंदर इतना बैठ गया था कि मैंने उसके बाद कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया. And I'm sure we heard you singing, and I can tell all the audience listening us that you sing really well. I wish कि आपको शुरू में किसी ने encourage किया है. And I'm sure all of our audience who are listening us today can relate with our stories, and they all must be having this sort of story in their life also. जैसे अगर मैं मेरी लाइफ की बात करूं तो in fact in my entire family, in my grandparents side and maternal grandparent side, everybody know that Kunal is a shy personality, that he don't talk to people very often. Right now I'm talking to the entire PIM association, and then this streaming is going live to many people, and then I mean, you know, part of our public speaking workshop and all, will interact across many people.
But in my childhood, I don't know what incident happened and why people thought that I am a shy personality or maybe I don't interact. But that was like जो दीपेंदु कह रहे थे कि आप blank CD होते हो and whatever you put in that CD get programmed very deeply in that. So somewhere I also accepted that I am a shy personality. I cannot talk in front of a people, and I started ignoring people. I started avoiding talking to people. In fact, that continued for a very long period in my corporate as well. In my 11 years of corporate, I can very sadly say that I have built a friendship, a very good friendship with only 2%. That's a horrible situation to be in. But then, of course, that's where this sort of a books comes in a picture, which helps you give your reflection, show you a mirror, then how you can improve on things. So we have talked about the problem part of the story, that we all have been, how it has been done to us, how this negative programming has impacted us, of course unintentionally, sometimes protecting us and all that way, but then how it has impacted and kind of limited our own capability. But how about the solution part of it? So just if you can, Vinay, enlighten our audience about that, what are the learnings you got from this book which helps you to overcome that old programming or to improve that programming, or how you have applied that in your life? See, what I did when I read this book, so I started with small. So I started writing my self-talk कि मेरा सेल्फ टॉक क्या होना चाहिए, क्योंकि लाइक वी आर सेइंग कि हम अपने माइंड को जैसा प्रोग्राम करेंगे वो उसी तरह फंक्शन करेगा. तो पहले मैंने अपना सेल्फ टॉक लिखना स्टार्ट किया, और उस सेल्फ टॉक को लिखने के बाद मैं उसमें रुक नहीं गया. आई यूज्ड टू रिपीट दैट एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में हुआ, आफ्टरनून हुआ, जब भी टाइम मिलता था मैं उसको रिपीट करता था. और फिर मैंने क्या किया, अपने घर के हर जगह जहां मैं जाता हूँ, मैंने एटलीस्ट अपने बाथरूम में भी लगा रखा है अपना सेल्फ टॉक. मेरे बाथरूम में मेरा सेल्फ टॉक है, मेरे रूम पे है, हर जगह मेरा सेल्फ टॉक लिखा हुआ है कि मैं कहीं भी जाऊं, इधर भी आंखें मेरी घूमे तो मैं अपने सेल्फ टॉक को पढ़ सकूं. So that's where I was able to apply the small change and I really find that कि मेरे अंदर बहुत सारा एक पॉजिटिव चेंज आया, कि जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स घूमते थे, कि जैसे कुछ नेगेटिव आया तो मैंने पॉजिटिव टॉक देख लिया, तो उससे मेरे को काफी हेल्प हुआ, और इट एक्चुअली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस लेवल, और जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत सारा चेंज आया. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप. इनफैक्ट अगर मैं, हम लोग अपने, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ नॉर्थ, और एंड आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट. I'm sure all the family has this value system, or especially in Indian culture and Hindu system, if I talk about, and I'm sure in other religion also, in some or other form, it must be said. जैसे हमारे कल्चर, हिंदू कल्चर में कहते हैं ना कि पूरे दिन में आपकी जीवा पे सरस्वती बैठती है एक बार. So speak well. I mean, this what I have learned from my mom, who herself is a school teacher. She is a and her subject itself is a Hindi. So this was our value system, what we have learned from our childhood. Ki speak positive, speak a good thing about because what you speak, that may come true in your life. So why not speak well? In fact, for my own self, I have self-talk, as Vinay said. I have a self-talk for myself, but not just for myself. I started keeping a self-talk for my kid also, who's just a 1 year, and from his birth itself, I kept a very simple self-talk. Many a time it doesn't make sense also, because the self-talk is very simple. Whenever I take him to sleep, I just say happy, healthy, good baby. That's a kind of rhyme I have created, and that's how I make him sleep. Now, I'm not sure how much positive impact it will do in my son. I'm sure it will does. But what it does in my own subconscious mind is it keeps me in a very relaxed and very positive state of mind, instead of being worried about all the time about his health. See, if something challenging has to come up, it will come up and we will tackle it. But why to unnecessarily give negatives to our mind? So this simple, small self-talk give me so much positive about my own kid, about his health, about his well-being, that I at least feel relaxed and I don't, pass on the negative vibes from my own brain. So I'm sure, Diptendu, you must be also trying some sort of a solution around that. So how about you share that what exactly you have done on this regard? Sure. So what we're talking about is law of repetitiveness. तो जैसे कि आप देखेंगे, कोई भी चीज अगर हम लोग रिपीटेडली बोलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, हम जब पढ़ाई करते हैं दिमाग में नहीं घुसता है, वी कीप ऑन स्पीकिंग द सेम थिंग, ठीक है, वो रट्टा मारना जैसा हो गया, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ इमोशंस इन्वॉल्व विद इट, ठीक है. तो कोई भी चीज अगर हम लोग बोलते हैं, अपने आप को भी बोलते हैं या सुनते हैं, ठीक है, वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड आवर सेल्फ टॉक एंड वी कैन लिसन, या हम खुद उसको बोले रिपीटेडली.
कौन सा चीज किसके लिए कितना काम करता है वो like it depends from person to person. What is your comfort level? How are you able to connect emotionally? So even for the brain it takes time to capture the self talk or whatever we are talking and registered it in our brain. तो वो न्यूरोपाथ में जाने को थोड़ा टाइम लगता है, राइट? तो जो भी ऐसे हम चाहते हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि जो भी हम चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं खुद को, क्योंकि इस बुक में क्लियरली लिखा हुआ है एंड आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ विथ मेनी एग्जाम्पल्स. मतलब पास्ट में भी मैंने ऐसा कुछ मैंने देखा है, मतलब अपने आप को रिलेट कर पाया जब मैं ये बुक पढ़ रहा था. एंड मतलब प्रेजेंट पे भी मैंने इसको किया. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मेरा लास्ट कंपनी ज्वाइन किया था, ठीक है, एंड आई टोल्ड टू माई सेल्फ कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट कंपनी एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू अ जॉब एंड आई एम गोइंग टू वर्क फॉर माई सेल्फ, ठीक है. एंड आई केप्ट अ टाइमलाइन फॉर माई सेल्फ एज 5 years. मैं 5 साल का समय लिया था. हाँ, वो 5 साल पे नहीं हुआ, 6 साल बाद हुआ, बट बाई सम मीन्स की वो क्या हुआ कि आवर ब्रेन इट रजिस्टर्ड इन आवर ब्रेन और वो खुद ब खुद वो वे खुद ही ढूंढ निकालता है. एंड हाँ, it happened in 6 years, right? And after I did not read the book at that point of time, right? लेकिन अभी जब मैंने ये बुक पढ़ा, then I wrote my self talk कि जैसे कि ऑफिस जाने के टाइम आपको कैसे लगता है, ठीक है, जब आप सुबह उठ के, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है तो हम ऑफिस नहीं जा पा रहे, बट when you wake up on Monday morning and आपको कैसे लगता है, right? But that is something negative that we are programming. Monday blues हम लोग बोलते थे कि या मंडे को ऑफिस जाना है एंड वी यूज टू फील ड्रेन आउट, ठीक है. तो जब हम इस सेल्फ टॉक को हम चेंज करते हैं, जब वी से दैट आई एम फीलिंग एनर्जेटिक ऑन मंडे मॉर्निंग, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक during the day and I am doing productive work in office as well as in my home. This was my self talk when I wanted to change this thing and I felt the difference. मतलब वो day 1 पे नहीं हुआ. And not only me, I could feel that my colleagues around me also feel the difference. They could see the energy in me when I greeted them in the morning. So ये self talk actually काम करता है and I experienced it myself and I'm sure a lot of you have also experienced it. Absolutely. I mean, wonderful examples you have shared, Ditendra. And two very important points you have mentioned about, self-talk here is one, of course, it has to have emotion attached to it. Anything what we do, if we don't have an emotional belief attached to that, accepting by our subconscious minds become more difficult. So definitely the self-talk what we are going to speak, if I myself do not believe on it at first hand, my mind and my brain will definitely not accept in a first hand. The second thing you rightly mentioned, that to everything it takes its own time. In fact, what I have experienced, that whenever you start with this self-talk kind of a thing to convert your old programming to a new positive programming, initially your mind resists to it. I have felt myself that your initially mind resists about it, but then that's how, it is like survival instinct. Your mind has been, programmed in a certain way for a prolonged period. All of a sudden you are trying to add something new over it, it will resist. But then as we know that it's going to help us by seeing all these examples, we should definitely try to push it and, kept on repeating, so that over a period, definitely we'll start seeing the transformation and changes. But both of you, to Vinay and Deeptendu, I'm sure all what we are discussing right now, it's not something very new and very unique, right? I'm sure most of our audience must be knowing that we should speak well, we should speak positive and all that. So what do you think is the missing ingredient, that despite knowing that, we should speak positive, our self-talk should be good, we shouldn't be thinking negative, and despite knowing all these things, why we are not able to apply this knowledge in our day-to-day life for a prolonged period or for a longest period of our life? I mean, sometimes they start but then give up over a period. So what do you think is the missing ingredients over here? How about you, Vinay? I mean, what do you feel that what is the missing ingredient? So Kunal, the missing ingredient here is like we actually don't have the association and we don't have the environment, because the kind of environment we are living in today's world, we are surrounded by the same people and the same environment. And the talk what we hear from each of them, it is like the similar talk what they are discussing on, because you cannot change the environment which is external to you. The environment which you can change, which inside you,
and also get associated with people who are having the same kind of thought process and having a growth environment. वही होता है ना कि वो बोलते हैं कि आप जिस संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। तो वो काफी अप्लाई होता है कि अगर आपको उस तरह के सोच चाहिए, कि आपको अगर ग्रोथ का एनवायरनमेंट चाहिए, आपको पॉजिटिव सोच चाहिए, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ बातें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बेस्ट क्या होता है कि यू गेट लाइक समवन की आपके साथ बात कर सकते हो। हम बात किससे करेंगे? अगर हमारे पास कुछ थॉट आ भी रहे हैं, पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ब्रेन के अंदर रखते हैं। एंड इफ यू in this book, it is very interesting line which has been mentioned कि 77% of the time we actually think negative. And it's quite mind blowing fact because we actually don't realize. लेकिन हम कहीं ना कहीं negative thought हम कहाँ से लेते हैं? Either we are like surrounded by social media, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. आप कितने से बचोगे? तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो. How about creating an environment and getting associated with people who are having that kind of mindset? Because it is, if you read this entire book, it covers everything, like it talks only mindset and self-talk. Wow, very important. In fact, not just mind-blowing, it is scary also to know that our mind thinks 77% time negative. I mean, quite scary. How about you, Deeptendu? I mean, what do you think is the how we can control this negative emotions or negative thoughts which comes to our mind? Sure. I, in fact, totally agree with Vinay what he mentioned just now. बहुत सही पॉइंट विनय ने बताया कि एक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन चूज अवर एनवायरनमेंट, कि हम किस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम चूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एक सीईओ के बारे में बता रहा हूँ, who of my one of my past companies, and he was taking a session on 7 effective habits by Stephen Covey. तो वहाँ पे वो बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि इफ यू रीड अ न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज देखते हैं, वहाँ पे आप काउंट कीजिए कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव न्यूज रहता है। बेसिकली आप आई एम नॉट मतलब किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दिस इज द एनवायरनमेंट दैट यू वांट टू चूज, राइट। अगर कोई न्यूज इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आके आपको बता ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ होने वाला, कोरोना वायरस है, ठीक है, आप नहीं चाहते हुए भी अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हो, आपको कोई ना कोई आके आपको बता देगा, आपको न्यूज मिल जाएगा। तो व्हाई शुड आई, दैट इज माय पर्सपेक्टिव, एंड दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय सीईओस लाइक हु वाज टेकिंग दिस सेशन। एंड it's very important to choose the atmosphere that we are in, because everything is impacting our subconscious mind. ये क्या होता है कि जैसे कि एक बुक में बहुत अच्छी तरह से एक एग्जांपल दिया हुआ है, our everything is like a keyboard, disk, memory disk and a screen which gives you output, right? अपना माइंड भी वैसा ही है। सो कीबोर्ड से क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, राइट। तो उस इनपुट, जो भी हम लोग इनपुट कहाँ से जा रहा है, एक तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जा रहा है, दूसरा हम क्या अपने आप से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है, दैट इज माई माइंड कंट्रोलिंग मी, राइट। और मैं कहीं से अगर सुन रहा हूँ ये कुछ एक नेगेटिव चीज सुन रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन आपको पता है कैसा होता है, राइट। नाउ अगर कोई एक पाकिस्तानी बंदा आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, व्हाट इज द ऑटोमेटिक फीलिंग दैट यू गेट फॉर हिम और हर, राइट। उसने कुछ अपने को किया नहीं किया, राइट, लेकिन फिर भी वो एक ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने माइंड से ऑटोमेटिक आ जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट वी हैव बीन लिसनिंग टू। बचपन से हम मैच देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का कैसा इमोशंस रहता है, न्यूज सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, डिस्कशंस होता है, कितना सारा चीज होता है, बट इफ द सेम पाकिस्तानी पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए न्यूजीलैंडर, उसको वैसा इमोशंस आएगा क्या? नहीं आएगा। इट्स जस्ट द प्रोग्रामिंग दैट वी हैव इन आवर माइंड, राइट। एंड this is just an example to correlate. Now if you want to be successful, you want to be positive enough, it is important कि हम कैसा सराउंडिंग चूज करते हैं, किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं। Do I choose to go and watch the news or do I choose to watch something positive जहाँ पे कुछ अच्छे बोल रहे हैं, right?
डू आई चूज टू रीड अ गुड बुक? ठीक है, जहाँ पे हम देखिए क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज है, या तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं या माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। बॉस कोई एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, राइट? ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ क्षेत्र में हम माइंड अपने को कंट्रोल कर रहा है और कुछ में हम माइंड को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है कि वी कंट्रोलिंग आवर माइंड, राइट? सो दिस बुक इज अगेन लाइक ऑसम। इस बुक जब ये बुक मैंने पढ़ना शुरू किया, all this thing like all this eye opener things started coming in front of me, and it's ऐसा है, ये मुझे बहुत हेल्प किया ये बुक ने। Wonderful, absolutely Ritesh, I mean जो आपने एग्जांपल दिया इंडिया और पाकिस्तान वाला, it was so striking, कि अगर वो न्यूजीलैंडर के सामने खड़ा है, then there is no such emotions, and that reflects that how a environment or association creates an impact in our mindset, in our thought process. And in fact, not just that, one very important line you have mentioned, that we have a control to choose our environment. I mean, somewhere I have listened in one of the talk show where it says कि अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हो और अगर मैं आपको हनुमान मंदिर में ले जाके बिठा दूं और अगले 6 महीने तक आप वहीं बैठे हो, तो आपको पूरी हनुमान चालीसा आ जाएगी। और वही आप you are a no voice in terms of a guns and everything, but अगर मैं आपको एक माफिया के बीच में ले जाके 6 महीने बिठा दूं, तो you'll know everything about those guns and bullets and all those things. So that's the impact you have in your environment and your association, and that's about कुणाल, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। तो इससे मुझे याद आया कि एक होता है ना कि आपको कुछ इच्छा होता है, ठीक है? मुझे महामृत्युंजय जो मंत्र है वो मेमोराइज करना का बहुत इच्छा, मतलब आई हैड a strong desire to do it, but I was not intentionally doing it. Then what I did was I switched on Mahamrityunjay mantra and started listening to it. एक बार 108 बार जब मैंने उसको सुन लिया, it automatically got registered in my mind. It was intentional, it was emotional, and that's how I got it. Right. So that's about choosing an environment. We need to be very careful. And in fact, when I choose peak impact mentorship, and I'm sure for both of you also, it was more of the learning what we got here, the wonderful books what we get here, apart from the skill set what we develop here, apart from all those things, the one important aspect what I understand in my initial days, that it gives me a surrounding, the association and environment of all positive people, where everybody is talking about adding values to themselves and adding values to others and the society. So that was the value system which I liked about the peak impact mentorship and being associated with it. So thank you so much, both of you, I mean, for your time and your thoughts about these books. I would definitely encourage all our audience today who are listening us to read this book. It will definitely help you, and don't just read, apply that in your life and you will see a transformational change. So thank you so much for all of you to listening us today. We'll be keep on coming to this platform to share our views and thoughts for wonderful other books and other learnings, so that we can add some values to your life. So thank you once again. Take care. Good night. Thank you, Kunal. Good night. Thank you. Good night.